guilds. Varta refers to economics. Ancient thinker used the word Varta to means the science of the national economy. तो वर्ता का मतलब होता था नेशनल इकोनॉमी के बारे में. कौटिल्य वर्ता इज ए नॉलेज नीडेड टू रन अ स्टेट इंक्लूड. तो कौटिल्य का ये कोटेशन है एक तरीके का कि वर्ता इज ए नॉलेज नीडेड टू रन अ स्टेट इंक्लूडिंग. तो इसमें क्या चाहिए आता है, तो एग्रीकल्चर आता है, एनिमल ब्रीडिंग एंड ट्रेड. जिसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है वैश्यास. According to the Mahabharata, Varta was the roof of the world, a things which was most essential for economic stability. Threefold meaning. Varta as a meaning of livelihood, Varta as a knowledge and Varta as a one occupation. तो आप लोग को एग्जाम में जस्ट ऐसे ही लिखना है एकदम. सॉरी. श्रेणी. श्रेणी पुगा गना वर्ता इन अ वैदिक लिटरेचर एज इंडिकेट ऑफ गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब गिल्ड का ऑर्गेनाइजेशन था. श्रेणी था, पुग था, गना. अब सब के बारे में देखेंगे. श्रेष्ठी बोलते थे काजी प्रेसिडेंट ऑफ गिल्ड को. श्रेष्ठी SRESHTHI. जेथका JETTHAK और पमुखा PAMUKKHA. तो ये होता था कौन, हेड ऑफ गिल्ड. और सेथीज SETTHIS. सेथीज को बोलते थे क्या, मर्चेंट या कम बैंकर्स. ऑफन हेडेड मर्चेंट्स गिल्ड. रोल ऑफ गिल्ड. रोल ऑफ गिल्ड क्या था, द गिल्ड्स वेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स that were used for manufacturing and controlling the demands of the people. These include basic factors related to manufacturing goods, controlling fluctuating prices of the government. This means that all the prices of the goods in ancient India were regulated by the members of the guild. Mahavastu and Milind Panho mentioned 75 different occupations, many of which were transformed into the guilds. The Jataks mentioned the number of guilds as 18. The growing importance of the guild is attested by the fact that the lawgivers like the Gautam and the Manu recognized the right of the traders, cultivator, horseman, artisan, etc. to frame rules of their respective association. These rules were to be taken to a consideration by king in giving legal decision. Manu referred to Sreni Dharma as having the force of law. The guild beginning from the 6th BC gradually gained importance in economy. They became crucial factor in organization of production. The vast majority of artisans joined guild since it was difficult for them to compete as individual against the guild with increasing demand for particular commodities and the consequent necessity to raise their output. Some guilds began to employ hired labor and slaves. वर्ता इन धर्मशास्त्र. तो धर्मशास्त्र में वर्त के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो पहला क्या है, मनुस्मृति. द मनुस्मृति डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ अ किंग. इट इज स्टेटेड दैट किंग मस्ट बी ट्रेंड इन द 4 विद्यास. तो 4 विद्या में किंग को ट्रेंड होना चाहिए. किसमें, तो अनविस्की में, फिर तराई में, दंड नीति एंड व्रता. ही शुड लर्न द व्रता फ्रॉम द पीपल. Yajnavalkya Smriti referred the king should be well versed in the 4 vidyas: Anviski, Dandaniti, Varta and Tarai. तो मनुस्मृति से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. कंक्लूजन क्या है, द एंशियंट इंडियन इंटेलेक्चुअल हैड completely ascertained the role of the Varta. Agriculture, animal husbandry and the traders are the 3 fundamental elements of economy was rightly identified as Varta. The king was assigned the charge to see to it that his subject had a proper source of livelihood. The Vidya of Vrata practiced through a dharma ensured the material well-being
of not only individual but also made sure that the economy flourished. तो ये था गिल्ड बड़ौदा पे आंसर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू।